हेलो हेलो गुड इवनिंग नमस्ते हाउ आर वी डूइंग कैसे हैं हम सब हाउ वाज टुडेज सेशन हाउ वाज लाफ्टर योगा टुडे कितनी हंसी हम लोग को और कितने लोगों को हंसाए हाउ मच डिड वी लाफ टुडे एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड वी मेक अदर पीपल लाफ टुडे गुड इवनिंग नमस्ते very good laughed a lot okay. You're a little bit tired now because you laughed so much. Energy should have gone high, no? Hello, hello. 7-5. Oh my god. 10. So many people. That's amazing. So good to hear. Very nice. 2. That's fine. We still have some time to go. अभी सेशन के बाद थोड़े लोगों को हंसा के फिर सो जाइएगा. Yes. Very good. तो रोते हुए हंसना मजा आ गया है ना बड़ा मजा आया. I called my friend on phone and we both laughed together. Amazing. What a great idea. So many people, all my patients and laughter, as they say, is the best medicine, and Dr. Vandana Kulkarni is following it. That's so good to hear. स्माइल खत्म ही नहीं हो रही थी 7 लोग हंसे वाह वेरी नाइस तो आज का लाफ्टर बहुत ही मस्त हुआ तो अब ये बताइए हाउ वाज टुडेज ब्रेकफास्ट व्हाट डिड यू हैव फॉर टुडेज ब्रेकफास्ट Good evening. Yes, 14 people. I think that's the highest, Suresh ji. My daughter was crying, made her laugh. Wow, very nice. Okay, whole moong dosa. Very nice. And onion chutney, buttermilk. Okay. Paneer paratha, moong dal chila, multigrain dosa with coconut chutney. I had my dinner some time ago and now I'm feeling hungry listening to all of this again. Moong dal chila, methi paratha. Amazing. Oat upma, sugarcane juice, chila with chutney. That's amazing. Very nice. And how are you enjoying the sessions? Sessions कैसा लग रहा है? Yeah, fine, excellent, good, great. How is it going for you? Are we learning something new every day? हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? Yeah, super, excellent, awesome, very good, nice. Amazing. And every day the takeaways that we are giving, no, try and implement one thing daily. थोड़ा सा रोज अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए क्योंकि उससे you'll be able to see big changes. Yeah. All right. So today also we are going to learn something very interesting. It is about hormone and nutrition and how they're related. कैसे with good nutrition we have such a great control on the hormones, and for that we'll welcome Dr. Umesh. Hello sir, unmute please sir. What's up, madam? How are you? Very good, how are you sir? I'm awesome, as always. Looking forward to today's session, conversation. मजा आएगा आज भी. आज थोड़ा complicated topic है. So let's see how that goes. And the sad thing is I don't have any story. So It should be different every time ना रोज रोज सेम करेंगे तो अब मजा नहीं आएगा तो so good to see कि आज कुछ नई तरीके से नए अंदाज में we learn about the hmm, topic. let's see how that goes. आज कितने सवाल आते हैं we'll try to cover. But I'm looking forward to this conversation. Shall we? Amazing. Yes, absolutely sir. ओके ऑसम चलो शुरू करते हैं. गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल. क्या हाल चाल? हाउ आर वी डूइंग? चैट बताइए मुझे जरा क्या हाल चाल. गुड इवनिंग. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हार्मोन्स. तो हार्मोन से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में सवाल हैं प्लीज सोच के रखिए because it's going to be very knowledge heavy session today. It doesn't mean आप बोर नहीं होंगे, but थोड़ा नॉलेज ज्यादा आएगा. एंड रिलेटिवली आज छोटा भी सेशन होने वाला है, बट देखते हैं कैसे जाता है. ठीक है, तो चलो यस डाल दीजिए चैट में और हम शुरू करते हैं.
ऑलराइट, ओके। तो हॉर्मोन्स और न्यूट्रिशन का कनेक्शन हम जाने उससे पहले हमें दोनों वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा, राइट? तो न्यूट्रिशन, आई थिंक हम सब लोगों को अभी पता है, वी नो व्हाट न्यूट्रिशन मींस, आई होप। इफ नॉट देन लेट मी थोड़ा सा रीइटरेट कर देते हैं। आई विल रीइटरेट व्हाट the word nutrition means. Anything that you consume food wise that has all the nutrients or the component that is going to nourish our body, that comes under nutrition. Or anything that you eat that can hamper your health, that also comes under nutrition. आपकी ओवरऑल लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आप क्या खा रहे हो, दैट विल डिसाइड वेदर योर न्यूट्रिशन इज गुड और न्यूट्रिशन इज बैड, whether it's healthy or unhealthy. Not a single food item, but your overall nutrition. Yeah, the nutrition is the food items that we eat. Depending upon what sort of sources you are eating, that will decide whether it's good or bad or in a long run. Okay, isolation mein on a daily basis nahi, in a long run. That's your nutrition side. Where it comes to hormones, I think 2-3 दिन पहले हमारा जो सेशन था, that's where I described कि if your body was a country, तो उसका प्राइम मिनिस्टर ब्रेन है, मोदी जी, ब्रेन। अभी ब्रेन कंट्रोल्स योर बॉडी इन टू डिफरेंट वेज, राइट? सिंपल है। वन, थ्रू द करंट, इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में से, नर्व्स निकल रहे हैं एंड नर्व्स आर गोइंग एंड ऑर्डरिंग योर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स टू डू डिफरेंट थिंग्स। दैट्स वन वे। द वे इज केमिकल मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स का डेफिनेशन है केमिकल मैसेंजर है वो आपकी बॉडी के। तो योर बॉडी इज मेड फ्रॉम ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और वो सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। क्यों? बिकॉज सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस को करने के लिए सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और वो कम्युनिकेशन होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। तो हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर ऑफ योर बॉडी, और जहां से हार्मोन रिलीज होता है, आपकी बॉडी में अलग अलग जगह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रिलीज डिफरेंट हार्मोन्स। द पार्ट वेयर द हार्मोन्स गेट रिलीज्ड उसको हम बोलते हैं ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड। तो ये डेफिनेशन समझ गए ना, तो अब आगे जाते हैं थोड़ा। अभी आपकी बॉडी में हार्मोन्स है ना, दे वर्क इन अ वेरी ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। आपने वो AR रहमान या अरिजीत का कॉन्सर्ट देखा होगा ना, तो सारे सारे म्यूजिशियंस ड्रम प्ले कर रहा है, कोई कोई बेस गिटार बजा रहा है, कोई पियानो बज रहा है, तो कोई अलग अलग म्यूजिशियंस पूरा एक कॉन्सर्ट बनाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का पूरा एक फंक्शनिंग चल रहा है, इफ इट वाज अ कॉन्सर्ट, तो वो एक ऑर्केस्ट्रा है। अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग म्यूजिशियंस अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। एक भी म्यूजिशियन ऊपर नीचे कुछ नोट कर लेगा ना, तो पूरे एक्सपीरियंस की खराबी हो सकती है, राइट? AR रहमान मस्त में गाना गा रहा है और पीछे जो बेस गिटार बजा रहा है वो आउट ऑफ ट्यून बजा रहा है, तो मजा नहीं आएगा दिल से गाना सुनने में। या अरिजीत सिंह चन्ना मेरे गा रहा है, आप एकदम मस्त पहुंच चुके हो अपने एक्स के या आपके प्यार के बारे में सोचने में, और अचानक से पीछे कोई जो दूसरा म्यूजिशियन था उसने आउट ऑफ ट्यून कुछ कर दिया, तो मजा नहीं आएगा वो चन्ना मेरे सुनने में, राइट? यू नो व्हाट आई मीन। तो एक एक म्यूजिक कॉन्सर्ट को सक्सेस बनाने के लिए सारे ऑर्केस्ट्रा सही लगता है ना, वैसे ही आपकी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, और वो भी एक रिदम में काम कर रहे हैं। सबका रोल है आपकी बॉडी के सारे फंक्शनिंग में, कोई ऐसे आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है। अगर एक हार्मोन ऊपर नीचे गया तो आपके सारे बॉडी फंक्शन पे दिक्कत आ सकती है। That's what I call domino effect. It's a negative domino effect, and I'll give you some example. But example तो उससे पहले थोड़ा हम समझते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन्स का स्टडी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हार्मोन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो वो एंडोक्राइनोलॉजी एक साल का पूरा सब्जेक्ट है। सो आई कांट परहैप्स कंप्लीट ऑल द हार्मोन्स, ऑल द फंक्शंस इन 15 minutes, but what I can tell you is, or what I can give you is a few examples and an example of how the hormones work, ठीक है? तो ये सारे हार्मोन्स का नाम आपने सुना होगा: ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, T3 T4 थायराइड हार्मोन, TSH हार्मोन, है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बुलाते हैं। जन मेंटल हेल्थ के लिए अलग से हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स है, सेरोटोनिन है।
डोपामिन है, ये सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन है। इन सारे हार्मोन्स का अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन एंड थायराइड वेरी कॉमन। इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को मैनेज करता है। तो आप जब भी कार्बोहाइड्रेट्स या कोई भी प्रकार का शुगर खाते हो, whenever you eat any sugars or any carbohydrates, your body will release insulin. Why? To put that carbs or sugar to work. वो शुगर को काम पे लगाने के लिए इंसुलिन का काम है। तो शुगर को काम पे लगाने का काम किसका है? इंसुलिन का है। तो इंसुलिन का एक सही लेवल में होना बहुत जरूरी है। इंसुलिन ऊपर गया तो भी दिक्कत, नीचे गया तो भी दिक्कत। सेम T3 T4. I don't know how many of you suffer from this condition called thyroid, but thyroid is a gland जहां से T3 and T4 हार्मोन निकलते हैं। So gland is thyroid, हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन T3 T4। Are you all with me? T3 and T4 का स्पेसिफिक काम है, and I will take this example to explain the whole hormonal system. T3 T4 आपकी बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं। उसका मतलब क्या है? You eat food for energy, right? We learned yesterday. Why are we eating food? For energy. One of the purposes of eating food is energy. तो जब भी तुम खाना खाते हो वो टूटता है, टूट के ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल्स में जाता है। सेल्स के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन से हमें सिर्फ एक ही बायोलॉजी का चीज याद है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सबको पता है ना? वो सेल में जाएगा, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा और आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट फंक्शन करेंगे। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म, राइट? ये पूरी प्रोसेस को मैनेज करने का काम है T3 T4 का। T3 T4 मैनेजेस योर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब T3 T4 दोनों का एक लेवल होना बहुत जरूरी है, सही मात्रा में होना जरूरी है फॉर इट टू फंक्शन फाइन। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। इवन इफ यू टू डू अ ब्लड रिपोर्ट, उसमें लिखा होता है कि ये रेंज है, इससे नीचे गया है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, इससे ऊपर गया है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट आर दे? हाइपर का मतलब है जरूरत से ज्यादा, हाइपो का मतलब है जरूरत से कम। If your thyroid gland is releasing more thyroid hormone than what you need, it's hyper. And if it is releasing less than what you need, it's hypo. तो अब आप उसका फंक्शन समझे ना, तो हाइपर एंड हाइपो में क्या होगा, दैट यू वुड अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, हाइपर एंड हाइपो वुड बिकम वेरी इजी। हाइपो में थायराइड कम रिलीज हो रहा है, मतलब आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा? आप एनर्जी को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? एवरीथिंग विल स्लो डाउन। यू विल फील मोर थर्स्टी, योर हंगर एंड एपेटाइट विल गो लो। आप जो भी खा रहे हो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, स्टोरेज में जाएगा। यू विल गेन वेट, योर स्किन विल बिकम ड्राई, योर मेंटल एनर्जी, यू विल फील फटीग, your mental health will become down, like you feel low and sad. That's what happens in hypothyroidism. It's a hormonal imbalance. Exactly opposite, when you are hyperthyroid, your weight will lose fast. You are finding it difficult to gain weight. आपको एंजाइटी होगा, इरिटेशन होगा। Exactly opposite. So hormones are very very important for your whole body's orchestra to function fine. If your body was working in a music concert, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं जा सकती। इंसुलिन, व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है? Diabetes is your body's incapability of producing insulin. If your body's pancreas, which is the gland जहां से insulin निकलता है, if pancreas is not producing insulin in the right amount, you can get diabetes, hormonal imbalance. PCOS, what is PCOS? Ovaries are female reproductive organs as well as glands जहां से estrogen and progesterone निकलता है। ओवरीज के अंदर अगर सिस्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए, तो ओवरीज अपना काम नहीं कर पाएंगी। ओवरीज अपना नहीं काम करेंगी तो उनका वन ऑफ द मेजर फंक्शन इज टू रिलीज दीज हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इफ दे वोंट रिलीज, you will have irregular periods, one of the most common symptoms of hormonal imbalance in women. PCOS में major symptom क्या होता है? Irregular periods. It will have negative domino effect on other. As I said, एक खराब हो तो दूसरे को भी खराब करेगा, तो negative domino effect होगा। क्या होगा? विमेन में जिनका, जहां पे टेस्टोस्टेरोन का इतना काम है नहीं, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन। हमारे मर्दों के जो फीचर्स है, दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, दैट्स बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उनका विमेन में बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बट when you have hormonal imbalance, your testosterone level can go high in women. So if people, if you, any of you are identifying as women and you have facial hair, or if you have मर्दाना आवाज जिसको बोलते हैं quote unquote, it's because of higher androgen levels or testosterone levels. What is that? It's hormonal imbalance.
So for us to understand what is hormonal imbalance, we had to understand what is hormones. For us to understand the connection between these two, we had to understand a couple of examples. तो अगर आप डायबिटीज समझे, पीसीओएस समझे, थायराइड समझे, तो हम आगे का जो न्यूट्रिशन के साथ कनेक्शन है वो समझ पाएंगे. तो मैं यहाँ पे कोई नए न्यूट्रिएंट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ. हमने सारे जो टूल्स हैं, 6 कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर पहले ही दिन इंट्रोड्यूस कर दिए थे. अब वो हार्मोन्स में कैसे काम आएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. फर्स्ट, रॉ मटेरियल थियरी. थैंक यू गुरमीत जी. मैं ये स्टील का बॉटल लाया हूं, राइट. तो अभी मुझे ये स्टील का बॉटल बनाना है, तो मुझे स्टील लगेगा, राइट, रॉ मटेरियल के लिए. एज सिंपल एज दैट. रॉ मटेरियल थियरी. इफ आई वांट टू मेक दिस स्टील बॉटल, आई नीड स्टील एज अ रॉ मटेरियल. If your body needs fats and proteins to make hormones, you need to eat fats and protein on a regular basis in right amount for your body to produce right amount of hormones. Simple as that. If you need 1 gram per kg of your body weight proteins, if you are only eating 20-25 grams of protein, your protein based hormones are going to get struggle, which is insulin and thyroxine. Your your collagen and keratin is going to struggle if you're not eating right protein. Then you will have trouble with all the problems that are related with that hormone. I have dealt with a lot of condition with hormonal imbalance just by fixing these two nutrients. Figure out how much fats you need, figure out how much proteins you need, start having it in the most sustainable way possible. Be consistent with it, give yourself a few weeks, you will start seeing changes. Yes, diabetes can be reversed. Type 2, type 1 autoimmune hai. We'll talk about it in some other day. Yes, PCOS can be reversed by nutrition. How? Just fixing the fundamentals. Give your body what it needs to manage your hormones. This was your raw material theory. Then vitamins and minerals also come in play. But you don't have to do, there is no separate vitamin or mineral for your hormonal health. I'll give you one tiny example. Iodine. Since childhood on Doordarshan, we have been seeing the ads of goiter. The neck full जाता है. Goiter करके एक बीमारी है जिसमें थायराइड का प्रॉब्लम होता है. क्या बोला जाता था? आयोडीन की कमी की वजह से. That's why आयोडीन युक्त नमक आया था मार्केट में. Very important for the thyroid production. So if you are not eating sodium rich food items, or if you are, then goiter can happen. Problem. Are you all with me? Vitamin D is vitamin D also known as hormone as well. Vitamin D is important for so many functions. So if you want to fix your hormonal health, fundas are very simple. You understood the connection of carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, and fiber on the hormones. Carbs and fiber have less likely role, but they still have role in the minor biochemistry level pathways. But on the surface level, if I was to give you an explanation, fats and protein, vitamin, mineral, you have to fix. And there are 3 other parameters also. Nutrition wise, there are things that you have to minimize. Those are doing damage to your hormones. So if you have a lot of stress and you're not doing anything about it, it will increase your cortisol or stress levels, and that can have negative domino effect. I'm not saying stress is bad for you. Stress is vital. But if you are getting stressed from tiny things and you're not doing anything about it, it can have a negative domino effect on your hormones. If you smoke, if you drink alcohol, if you do marijuana, can affect your hormones in a negative way. If your sleep is not right, if your sleep is not regular, आज आप 10 बजे सो रहे हो, कल 12 बजे, परसों 2 बजे, फिर रात को 8 बजे सो रहे हो. If it is irregular, if you have कच्ची sleep, you are not going into the deep sleep, can impact your hormones. If you are eating a lot of trans fats, if you are eating a lot of refined sugars, a lot is the keyword. I'm not saying avoid, I'm saying minimize. So there are things that you need to minimize to better your hormonal health, but more importantly, you have to start giving your body what it needs for it to produce hormones in the right level. And once you do that, पूरी body का orchestra मस्त में चलेगा, आप अच्छे से अपना गाना सुन सकोगे, and life will go hunky dory. If not, then ऊपर नीचे होगा, and then you will suffer from condition like obesity, diabetes, PCOS, thyroid, and all. So that was it about hormones. Let's go through some questions. Amazing. Thank you so much for that wonderful insight. We have a lot of questions pouring in as usual. We took some while you were discussing, so we'll take those up
first, and then we can Sure. take the ones that are running. Yes, let's go. सर मेरा यूट्रस और राइट साइड की ओवरी रिमूव हुई है, तो इससे Hmm. मेरे हार्मोन्स पे क्या साइड इफेक्ट्स होगा क्या? आई मीन हिस्टेरेक्टोमी और Hysterectomy and ovaries be removed हुए हैं, तो if one ovary is there, your body will adjust to producing whatever hormones it needs. So I think in one of the sessions we spoke about homeostasis, that your राइट. body likes to be healthy. It's us that we keep on doing only कि ये ऊपर नीचे करना. Your body loves to be in a harmony. So even if you have one ovary, yes, your body will come to terms with it as long as you are not messing about with it. Hormone changes which happen during pregnancy. So one user has written that it made them allergic to sunlight, and if they come in contact with direct sunlight, they get rash and hives. Is Hmm. there anything that can be done in diet to overcome this? So first of all, I don't think allergies are directly connected with hormones. I हमने I think one of the sessions we have spoken about it कि allergy is very dicey term. I want you to be perfectly sure about कि you Right. are allergic to sunlight. It could be something else. So first consult an MD medicine, get your blood reports done and see what exactly is happening. Because pregnancy के बाद जो hormonal changes होते हैं, they don't end up being you being allergic to certain things. That's a different tangent we are talking about, so it's not connected here. So we have another question, which is how can hypothyroidism be reversed? Would you want to take it today or when we discuss it on 20th, a topic completely dedicated to thyroid? We have a separate day on thyroid, but just to give you a chota sa brief here, there are two ways the thyroid can happen. If it is autoimmune, then you might have to be on the pills throughout your life. We can minimize the pills to minute dose, but एक होता है ना कि दवाई खा के आप जी रहे हो, but it's a struggle वाला जिंदगी. But दवाई खा के भी you are having a full on energetic life. That's what we can achieve. So दवाई will be very minimum and your life potential will be maximum. That's what we can achieve through diet and lifestyle changes in both kind of the thyroid. We'll talk more about it when we talk in detail. Absolutely. Please tell about high cortisol, awake in the middle of night at 3 a.m., how to regulate with food. We can't regulate it with food. High cortisol is a stress hormone. So there is something going on which is keeping you up at night. So meditation hai, yoga hai. These two are very in hand tools for you to manage stress. But whenever I talk about stress ना, तब मैं सबको बोलता हूँ कि जब तक स्ट्रेस का एपिसेंटर जो चीज की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, if that is not sorted, then the बाकी सारी चीजें तो सरफेस है ना. You know what I mean? Like, if, for example, if you have lost someone, yeah, if you have a big interview coming, yeah, you have taken a loan and you are finding it difficult to pay off, or you had a fight and now you want to confront someone. Whatever situation, if that situation is not sorted, you are going to have these episodes. So for you to manage that episode, you need to define a coping strategy. So meditation, breathing exercises, yoga could be. Nutrition wise, we can't immediately do something. We also run a journaling workshop once in a while Yeah, for us. yeah, that would be awesome. Hmm. I have thyroid and menopause period, not able to lose weight related to hormones. It is, but thyroid is the major umbrella there. But Sachi, okay, let me give you an answer. अभी thyroid वाला भी, ठीक है? आप thyroid से deal कर रहे हो या PCOS से deal कर रहे हो या diabetes से deal कर रहे हो, आपने फिक्स ये चार चीजें ही करनी है. हार्मोनल इम्बैलेंस के अम्ब्रेला में आता है. इससे बड़ा अम्ब्रेला कॉल हार्मोनल इम्बैलेंस. उसके अंदर ये सारी कंडीशंस आती है और उनका सोल्यूशन ये चार वे में ही है. You have to be active, you have to come out of the sedentary lifestyle, and 1 hour of yoga with habit is not enough. You have to be moving throughout the day as well. Two, you have to fix your nutrition. हफ्ते में ग्रीन टी पीना या इंटरमिटेंट फास्टिंग करना not enough. You need to give your body everything that your body needs. Three, you have to sleep on a regular time and good quality sleep. And four, you have to manage your unmanaged stress. These are the four things which you will do. जो भी न्यूट्रिशन का डिफरेंस होगा, whatever is different, like for example, Priya ji has thyroid and Namita has PCOS and Renuka ji has diabetes. तो इन तीनों का जो डाइटरी डिफरेंस होगा वो उनके चॉइसेस, उनके कल्चर, उनके बॉडी टॉलरेंसेस के हिसाब से होगा. बट हम स्टिल कर क्या रहे हैं, हम
खाने को फिक्स कर रहे हैं, मूवमेंट को फिक्स कर रहे हैं, स्लीप को फिक्स कर रहे हैं और स्ट्रेस को फिक्स कर रहे हैं. So these are the four things that we need to do regardless what hormonal imbalance you are going through. Can hormone imbalance cause skin darkening? Yes, it can. जो पिगमेंटेशन होता है, that can be. So you have to be in touch with dermat. आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी लगाने पड़ सकते हैं, बट अगेन एज आई सेड कि हमारा जो स्किन है इट्स लाइक अ मॉनिटर एंड हमारा इंटरनल सिस्टम इज अ सीपीयू. तो सीपीयू में जो चल रहा होगा वो मॉनिटर पे दिखेगा, है ना. आप सीपीयू पे स्क्रीन थोड़ा साफ कर सकते हो स्क्रीन गार्ड लगा के, बट दैट्स अबाउट इट. तो अंदर से ही हमें फिक्स करना है. How to manage hormones during perimenopause and menopause? Be in touch with be in a regular touch with a gynecologist and nutritionist both. Trust me, it is very very important, extremely important. Okay. Um, Looking for more questions. Thyroid, gut health, PCOS, diabetes, and weight management are topics that we are going to discuss in the coming week, Sunday Coming to week. Thursday. Yeah, so those things, yes, we will take more questions about these topics on those days. So if you have any other questions, good idea to ask them now. Some people are Deep, asking about lichen planus. Lichen yes. planus is not hormonal, it is autoimmune. So autoimmune is a condition where your body का immune system जिसका actual काम होता है to prevent you from external, harms. So bacteria, virus, fungus से आपको protect करना काम होता है immune system का. But autoimmune is a condition जहाँ पे your body considers your own body cells as enemies. तो lichen is one of those condition जहाँ पे आपकी बॉडी आपको खुद को अटैक कर रही है. There are dopamine tablets available. How effective is that in managing stress? Should it be taken? Even melatonin tablets too. Please throw some light on this. डोपामिन टैबलेट्स मुझे सेंस नहीं बना था, बिकॉज वी आर सराउंडेड विद डोपामिन. You just eat a piece of bread and your body will release dopamine. You go and watch Instagram पे reels, your body will release your dopamine. ठीक है. We are actually surrounded with dopamine, so dopamine के pills लेना not make sense. Instead you should focus on oxytocin, serotonin and endorphin. आप अगर 20-25 मिनट के लिए वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करेगी, यू विल फील बेटर. आप नेचर में जाके वॉक करोगे, सेरोटोनिन रिलीज होगा, यू विल फील बेटर. इफ यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वन, योर बॉडी विल रिलीज ऑक्सीटोसिन, you will feel better. Dopamine, we are already surrounded. Melatonin is a hormone that manages our sleep. You can take melatonin, but only and only after a consultation with MD medicine or a neurologist, because there are certain people who can get dependent on melatonin. उसके बगैर फिर आपको नींद नहीं आएगी. So अपने आप से जाके supplement मत लो melatonin का, your sleep cycle can get messed up. All right. How to prevent imbalances of hormones for PCOD? Prevent, मतलब हाँ, like so when you say PCOS को प्रिवेंट करना है, तो वही चीजें करनी है हमें जो सोल्यूशन के लिए करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर पीसीओएस का पहले तो वी हैवंट फाउंड एनी रीजन. इट्स अ इडियोपैथिक कंडीशन. हम वो इडियोपैथिक में डाल देते जिसको हमें रीजन नहीं पता होता. तो पीसीओएस वी डोंट नो, बट वी हैव सीन दीज पैटर्न्स. सो पीपल हु कम विद पीसीओएस, उनमें एटलीस्ट दो चीजें होती है. या तो उनकी लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, या तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, या तो उन्होंने बहुत शुगर खा लिया अपनी लाइफ में, या तो उनका स्लीप मेस्ड अप. इनमें से दो चीजें होती ही होती है. आई हैव सीन मोर देन टू. सो अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है तो आपको स्लीप रेगुलर रखनी है, शुगर को मिनिमाइज करना है, मूव करना है आपको रेगुलरली. एंड अगर स्ट्रेस है तो उसके बारे में कुछ करना है. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. यू कांट बी लाइक मुझे ओवरथिंकिंग होता है, तो सबको होता है, रहने दो. right. Absolutely. How to reduce male hormones in female? सेम Same. सेम How सेम. does increase in progesterone lead to formation of cysts in breast? Is it a No, very important I mean, question? सच बताऊं तो this is a question for a gynecologist. I'm not entirely sure about that question. Sure, So, we will take this up. We have a session with a gynac soon. yeah. What is the connection between hormonal change and joint pains? Hormonal change in joint pains. I'm just thinking.
It's a good question, but I can't, मेरा दिमाग अभी वो connect नहीं बना बैठ रहा है. We Vitamin can take D. it up tomorrow हाँ, if you want. yeah, we can take it up tomorrow. But there is no major ऐसे vitamin अगर आपका hormonal imbalance हो रहा है. But yes, so the only connection that I can think अभी is menopause and perimenopausal time में hormonal changes की वजह से आपका calcium storage ऊपर नीचे होता है. That's why you get osteoporosis. So menopausal ladies को बोला जाता है कि आपको calcium supplements या calcium पे बहुत ध्यान देना है. Otherwise you can lead to osteoporosis. So yeah, but if I can think of any more connection, I'll let you know. Absolutely. What makes autoimmune disease, or is it by birth? Is it genetic? It can be genetic, but not necessarily. Autoimmune का भी again medical science के पास कोई जवाब नहीं है. All right. Sir, you can also look for questions if you think something Radhika else. is saying Dr. Umesh somewhere read said that pistachio has um okay, Natural well, melatonin. I'll tell you. I'll tell you. Um, बादाम, पिस्ता, इन सब में एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन. Tryptophan is a raw material for your body to produce melatonin. ठीक है, तो दैट्स द रीजन व्हाई मम्मी जब हमें बोलती थी कि बादाम खा याददाश्त अच्छी रहेगी, तो उसका भी सिमिलर पाथवे है, बिकॉज ट्रिप्टोफैन आल्सो हेल्प्स यू प्रोड्यूस सेरोटोनिन इन योर बॉडी. सेरोटोनिन इज रिस्पांसिबल फॉर योर स्लीप एंड मेमोरी एंड कंसंट्रेशन. तो ये कनेक्शन है. Um, Constant bloating. Is it a hormonal issue or is it a gut health? गट हेल्थ इश्यू. Yeah. बट ओके, How सो मुझे थोड़ा एक मैं पीछे जाता हूँ इससे. हम ये पूरे शुरुआत में सेशन में जब मैं बात कर रहा था, तो आई वाज टेलिंग यू कि हॉर्मोन्स इट्स नॉट एन आइसोलेशन में वो काम नहीं कर रहे हैं. दे आर मैनेजिंग अ बिग ऑर्केस्ट्रा. तो वी कांट से कि हार्मोन का गट पे नहीं होगा, बिकॉज गट हेल्थ भी इवेंचुअली तो ब्रेन का ही काम है ना. ब्रेन ऑर्डर दे रहा है हमें. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग. इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा. कोई भी चीज ऊपर नीचे गई तो ऊपर नीचे हो सकता है. तो व्हेन आई से कि हार्मोन्स का गट हेल्थ के साथ कनेक्शन नहीं है, ऑन द सरफेस में कनेक्शन नहीं दे पा रहा हूं. अदरवाइज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. Of course. Mm, how Can to we, manage growth? Sorry, how to manage what? growth hormone to increase height for children. Nothing special, Baba. Growth hormone is a protein hormone. You have to check. हमने I think 2 दिन पहले वाले सेशन में भी बात किया था कि if kids want to increase height, it will mainly rely on the parents का height, genetic, and उसके बाद lifestyle. और lifestyle में कुछ changes लाने हैं तो calcium, phosphorus and protein and fats इन पे ही ध्यान रखना है. तो कुल मिला के वी नो हमारे पास, हमने वो वाला मूवी होता है ना कि जहाँ पे एंडिंग सबसे पहले दिखा दिया, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स कि हम पहले वाले पार्ट पे कैसे पहुंच रहे हैं. सो या दिस दैट. Hair fall is caused by which hormonal problem? Please explain, Chanchal ji. हेयर फॉल कैन बी कॉज्ड बाय मल्टीपल थिंग्स. मल्टीपल थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल आपके स्काल्प में कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है. आप बहुत सारे मेरी तरह हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हो तो भी हो सकता है. अगर आपको जेनेटिक आपके पापा के बाल जा रहे थे और आपके भी जाए तो वो भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स कैन हैपन. देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वन हार्मोन यहाँ पे. I get Always, reg- always irritated. Hormones. But I think that's the one of the most common places that we used कि यार hormonal हो रखा है इंसान. When you feel irritated. Yeah, go on. I get regular periods in general, but can stress cause hormonal balance and delayed period even though there is no underlying condition? Why would you think so? I mean, if yes, then why would you think so? मैं समझा नहीं. Stress cause. I get regular periods in general, but Hmm. can stress cause hormonal imbalance and delayed period even though there is no underlying condition? Yeah. Cortisol. कॉर्टिसोल का बहुत खतरनाक कनेक्शन है इरेगुलर पीरियड के साथ. सो जो जब आपके गायरक आएंगे ना, उनसे भी आप पूछ सकते हो. इट्स क्रेजी. इट्स सो क्रेजी.
बहुत बार क्या होता है कि a lot of clients come to me with the irregular periods का complaint. So I get their FSH, LH levels done, estrogen, progesterone levels done, PCOS पूरा जो profile होता है करा, सब कुछ ठीक है. And then when I try to go deeper in their life, तब पता चलता है कि there is something going on. Either they are going through a breakup or something can lead to irregular periods. All right. I think most of the questions are just being repeated और हमारे पास इनके related अलग से sessions हैं भी. So uh, let's end the session for today. Let me see if I can take one more. Can thyroid and diabetes? Yes, thyroid depend करता है कौन सा है, diabetes again depend करता है कौन सा है. अगर दोनों में autoimmune है तो can't, lifestyle से हो है तो yes we can. How obesity can reduce happen due to how obesity reduce happen. I'll take this and then we'll obesity and stress का connection मैं बता देता हूँ, ठीक है. Whenever you're stressed, your body's cortisol levels will go high. Cortisol level जब भी high होता है तो your body is in a low की situation of scarcity. तुम्हारी body को लग रहा है कि अब कोई बड़ा खतरा आने वाला है, तो जो भी calories आ रही है let's conserve. So if you are stressed, even if you are eating less, your body is storing because आपको लग रहा है, आपकी body को लग रहा है कि कुछ तो खतरा है. Let's conserve all the energy that we are getting. So if you are stressed and you are trying to lose weight, counterproductive. You have to do something about your stress as well while fixing your diet and movement. ठीक है? But interesting है, ये बहुत interesting है, ये connections ढूंढना. We'll get more questions. You guys have the query form and we will be sitting on the queries and we'll be getting back to you. But अभी हम कब मिल रहे हैं? Sunday को. Sunday ko with weight management. Oh, beautiful topic, no? Absolutely. And so many people have so many questions around weight management. Increase करना है, decrease करना है, कैसे करना है. Everything we'll discuss on that day. Yes, Thank yes, you so yes. much for My today's pleasure. insight My knowledge. pleasure. Good night, everyone. Shakir, मिलते हैं. Bye bye. Bye, Amini. Bye. Bye bye. Good night, everybody. Take care. Hope we learned something interesting today. If you did, type a yes in the chat box. कुछ नया सीखे तो please type yes. Yeah, so fun, no? ऐसे रोज कुछ थोड़े से 15 मिनट में भी learn something. It is a very good activity also for the brain. You know, your brain also becomes sharper if you're learning something daily. And we hope that these sessions are doing that for you. Of course, we do brain yoga, we laugh a lot, we do some stretching, we do some dancing, but equally important that this is, and we hope you continue to have healthier breakfast daily. We will not meet tomorrow and day after, which is Friday and Saturday, for better breakfast, but we will definitely meet you tomorrow for Her Health Matters. So please join in. We'll talk about breast health tomorrow. कल breast health के बारे में बात करेंगे with our gynecologist at 8:30 p.m. वी विल सी यू टुमारो फॉर योगा. कल सुबह योगा के लिए मिलेंगे. अगर आप डांस स्ट्रेच करते हो तो उसके बाद आप डांस एंड स्ट्रेच कीजिए, एंड देन वील सी यू एट 8:30 for our knowledge session, which will be Her Health Matters. You can attend, you can get your families to attend, daughters, granddaughters, grandmothers, anybody you know, even your male partners. You know, the males in the house also should be aware about what's happening with their partners, with their daughters, with their mothers, right? So सबको बुलाइएगा. कल बहुत मस्त सेशन होगा. इट्स गोइंग टू बी इन अ पॉडकास्ट फॉर्मेट. वील ऑल्सो टेक सम Q&A. That's it for today. Please take some rest. Good night. Namaste. Bye bye. See you tomorrow.